Hello my dear students, we were discussing oscillations and in our previous lecture we have discussed the differential equation of oscillations. We have seen that an oscillation, that is simple harmonic motion, can be represented by this differential equation d2x by dt square plus omega square x is equal to 0. Okay, today we will discuss how to determine various other quantities like velocity, acceleration, and equation for displacement of the particle which is performing simple harmonic motion. Now let us see acceleration. How to determine the acceleration of the particle that is performing oscillation. See, now we have got this differential equation d2x by dt square is equal to minus omega square x. Now this d2x by dt square is what? This is only acceleration because x is the displacement. If x is the displacement, then dx by dt will be the velocity and dv by dt will be equal to acceleration. Now if v is equal to dx by dt, तो इसका और एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, that is double differentiation d2x by dt square. So therefore this is acceleration. Therefore acceleration is equal to what? Minus omega square into x. So this is the acceleration of the particle that is performing linear simple harmonic motion. Okay. Now we want to find out the velocity. See. Now acceleration is what? See, we have got the expression for acceleration. So acceleration is what? dv by dt, that is rate of change of velocity with respect to time. So this is equal to minus omega square into x. So what we will do, dv by dt को we will make a slight change. This is derivative of velocity with respect to time. Okay, so this is derivative of, see, velocity is what? Dx by dt. Okay, so this is d dt of dx by dt. This is equal to minus omega square into x. Clear? So now, see, this is dv by dt. This is velocity, no? So dv by dt को हम लोग क्या करेंगे? We will make small changes. We will write it like dv by dx into dx by dt. Okay. This is ultimately dv by dt only. This is equal to minus omega square into x. Now this is velocity. So this is dv by dx into v is equal to minus omega square into x. Now we will separate the variables. V dv, this one, is equal to minus omega square into x. Okay. Now what we will do is we will integrate both the sides. Okay. So integrating on both the sides, what we get? Integral of v dv is equal to integral of minus omega square into x into dx. Okay, dx. This dx. So now, what is the integral of v with respect to v? This is v square by 2 plus some constant of integration c1. This is equal to minus omega square, because this is constant. Integral of x with respect to x is what? X square by 2 plus another constant of integration c2. Okay, this being indefinite integral. Now what I do is v square by 2 is equal to minus omega square x square by 2 plus this and this together, I make it another constant. Okay, addition of two constants will give us one more constant c. Okay, now let us
use the condition that the particle which is performing linear SHM, this is the mean position, what happens is when it reaches the extreme point, then x is equal to what? A. So when x is equal to A, the value of velocity is equal to what? 0. Okay, because it comes to temporary halt. When x is equal to plus or minus a, या तो इस end में जाए या इस end में जाए, velocity will be equal to 0. So therefore, अब velocity 0 है, इसकी जगह पे 0 रखेंगे. This is equal to minus omega square. x की जगह पे plus or minus a का square. तो मतलब हमको मिल जाएगा a square upon 2 plus c. So therefore, c is equal to, इसको इस तरफ लेके आ जाएंगे, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2. सो वी हैव गॉट द कांस्टेंट. सो नाउ व्हाट इज द इक्वेशन दैट वी गेट? देयरफॉर v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2. So 2 is there on both the sides. Let us multiply the entire equation by 2. So what we get is v square is equal to, omega square is common. Let us take common omega square. This a square I will write first, minus x square. Okay, 2 has cancelled. We have multiplied the entire equation by 2. So 2 into 2, this 2 by 2 is 1. Okay. So therefore, v square is equal to omega square a square minus x square. So what is v? V is equal to square root of this. Okay, this will be plus or minus omega under root of a square minus x square. This is the expression for the velocity of the particle which is performing simple harmonic motion. Okay, now let us see how to get the displacement. Okay, now the magnitude of velocity is equal to omega under root of a square minus x square. We are taking only magnitude. Plus or minus is only for denoting the directions. If it is on this side, it is plus. Okay, if it is on this side, it is minus. So it is as per the conventions. So what we will do is v is equal to omega under root of a square minus x square. So velocity is what? Dx by dt, rate of change of displacement with respect to time. This is equal to omega under root of a square minus x square. Okay. So let us separate the variables. Dx upon under root of a square minus x square is equal to omega into dt. Now let us integrate on both the sides. Okay, so integral of dx upon under root of a square minus x square is equal to integral of omega into dt. Now what is the integral of under root of a square minus x square? This is sine inverse of x by a plus some constant of integration. This is equal to omega is constant, integral of dt is t plus some other constant of integration. Why? Because this is indefinite integration. Clear? So now I will combine, I will take this c1 to this side. So c1 plus c2 will give us another constant, that is c. So what we get? Sine inverse of x by a is equal to omega t plus c1 plus c2. So इसको combine करके we will get another constant. Suppose it is phi. Okay, या तो इसको phi 1 plus phi 2 कर दो. Because previous derivation में हमने c1 और c2 c लिया था ultimately. So just to differentiate it so that we prevent confusion, इसलिए हम लोग phi 1 phi 2 ले रहे हैं. Phi 1 plus phi 2 is phi. So now sine inverse of x by a is equal to omega t plus phi. Therefore x by a will be equal to what? Sine of this entire thing, omega t plus phi. Clear? So therefore displacement x is equal to
a sine of omega t plus phi. This is the general expression for the displacement of the particle which is performing linear simple harmonic motion. Okay, so अब हम लोगों के पास तीनों इक्वेशंस है, ये तीनों एक्सप्रेशंस है फॉर डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस phi. ओके, एंड वेलोसिटी v इज इक्वल टू व्हाट, प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, and acceleration a is equal to what, minus omega square into x. So all the three expressions we have. See, now general expression for the displacement is equal to what, x is equal to a sine of omega t plus phi. Okay, this is the general equation for the displacement of the particle which is performing linear simple harmonic motion. Now इसका अगर हम लोगों को वेलोसिटी चाहिए, इसके टर्म्स में अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे. सो डिफरेंशिएट अगर करेंगे dx वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx बाय dt, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, a तो कांस्टेंट है, ये साइन का डेरिवेटिव क्या है, cos ऑफ ओमेगा t प्लस फाई into derivative of this omega t plus phi. So derivative of omega t is omega, phi का derivative तो zero हो गया. So this is a omega cos of omega t plus phi. I hope that you already know derivatives in mathematics. Okay, so ये हमारा हो गया expression for the velocity of the particle. Now acceleration चाहिए हम लोगों को, तो क्या करेंगे, ये velocity को differentiate करेंगे with respect to time. So this is a omega, ये तो constant है, cos का derivative minus sin of omega t plus phi, and derivative of omega t plus phi is again omega. So omega into omega is omega square. So this is equal to minus a omega square sin of omega t plus phi. So these are the various expressions for derivatives and velocities, accelerations and displacement of the particle that is performing linear simple harmonic motion. Okay, now see, general expression for the displacement of the particle performing linear simple harmonic motion is x is equal to a sin of omega t plus phi. Okay, now इसके दो केसेस पॉसिबल हैं. केस वन इज, देखिए हमने क्या बोला था कि हम लोग एक स्प्रिंग लेंगे, स्प्रिंग को बोर्ड पे एक एंड फिक्स कर देंगे, दूसरे एंड में हम लोग एक छोटा सा कोई भी ब्लॉक कनेक्ट कर देंगे और यहाँ एक टेबल होगा. क्लियर, यहाँ से नॉर्मली वो ब्लॉक इस पोजीशन पे होगा, उसको खींच के हम लोग अगर छोड़ देते हैं, सो देन इट विल परफॉर्म ऑसिलेशंस लाइक दिस. अब देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक तो हम लोग ऑसिलेशंस का इनिशियल पॉइंट मीन पोजीशन पे लेंगे, मतलब मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ ऑसिलेशन, हमने यहाँ से तो छोड़ दिया. ओके, जब ये इधर चला जाएगा, इधर यहाँ से वापस मीन पोजीशन पे आ जाएगा, वहां से हम लोग टाइम स्टार्ट करेंगे. सो एट टाइम t इज इक्वल टू 0, what is the displacement, x is equal to 0. क्यों, क्योंकि वो मीन पोजीशन पे है. वही दूसरा एक केस क्या हो सकता है कि हम लोग उस ब्लॉक को इधर खींचे हैं, सो ये एक्सट्रीम से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके ऑसिलेशन, मतलब एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जब टाइम स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू a. क्लियर, सो दीज आर द टू केसेस. अब केस वन में हमने क्या बोला, oscillations start from the mean position. Okay, अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मीन पोजीशन से अगर ऑसिलेशन स्टार्ट करने हैं, सो एट t इज इक्वल टू 0, मतलब एट इनिशियल टाइम x इज इक्वल टू व्हाट, 0. सो देयरफॉर देखो x इज 0
दिस इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी, टी तो जीरो है, ओमेगा टी विल बी इक्वल टू जीरो, बचता क्या है फिर फाई, क्लियर। सो देयरफॉर साइन ऑफ फाई इज इक्वल टू, ए को इधर ट्रांसफर करो, जीरो अपॉन ए इज अगेन जीरो, तो देयरफॉर फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ जीरो, मतलब फाई इज इक्वल टू either 0 or pi, clear। so therefore हमको इक्वेशन क्या मिलता है, देखिए अभी x is equal to a sin of ओमेगा t प्लस 0, ओके, मतलब ओमेगा t मिलेगा, या फिर साइन ऑफ ओमेगा t प्लस पाई, अगेन आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, साइन ऑफ theta plus pi is again sin theta only. So therefore this is a sin of omega t. This is the equation for the displacement of the particle when it starts from mean position. Okay, oscillation का starting point कहाँ पे होगा, mean position से. So then this will be the equation. Clear? Now what is the other case? Case 2 is oscillation start from the एक्सट्रीम पोजीशन। अब एक्सट्रीम पोजीशन मतलब क्या है, या तो वो एंड में रहेगा x इज इक्वल टू ए, या तो फिर इस एंड में रहेगा x इज इक्वल टू माइनस ए। सो एट t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए। सो इस केस में क्या होगा देखो, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए, दैट इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। अब t इज इक्वल टू 0, ओके, सो देयरफॉर हाँ ये तो 0 है, हाँ, सो ओमेगा t विल बी इक्वल टू 0 साइन ऑफ फाई, ओके, सिंस वी हैव टेकन दिस x इज इक्वल टू प्लस और माइनस a, t को तो 0 लेना पड़ेगा, सो देयरफॉर प्लस और माइनस 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ फाई, मतलब फाई का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, अगर प्लस 1 होना है तो पाई बाय 2, माइनस 1 होना है तो 3 पाई बाय 2, क्लियर। सो देयरफॉर व्हाट विल बी द इक्वेशन, इक्वेशन विल बी x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2। अब साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, cos of theta. So therefore this will become equal to what, x is equal to a cos of omega t. Okay, so depending upon whether the particle that is performing simple harmonic motion is starting from the origin or if it is starting from the extreme point, the equations for the displacement will be different. Okay, in the first case it will be x is equal to a sin of omega t, okay, and in the second case it will be x is equal to a cos of omega t. अब start तो particle कहीं से भी कर सकता है, okay, we can start the oscillations from anywhere. ये तो हमने दो standard cases ली, जब origin से start होता है या तो फिर extreme position से start होता है, clear? I hope you have understood all these equations. Okay, you must remember all these formulas. Okay, these are very important for solving the questions in the examination. Thank you very much.